Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे आमे फ्रेनेल डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए वायर एई विषय रे पढिबा सो फॉर दिस पर्पस obviously we have to consider a wire here which is taken to be AB and suppose it is a very thin wire having a small thickness that is D right अच्छा ए जो वायर जो अछि आमे याकू गोटे सिलिंड्रिकल ऑब्स्टेकल भलिया ट्रीट करि परिबा okay cylindrical obstacle like this okay so this obstacle which is in terms of a wire is placed before the slit okay eta उठे slit अछि जो थिरे की इ source रू light आछी okay and we are collimating this light and it is incident on this wire AB right now the slit and the wire are placed perpendicular to each other and both are perpendicular to the plane of the paper okay now let us consider a cylindrical wavefront here which is xy right which is falling on the wire and is formed when the slit is illuminated by a monochromatic light monochromatic mane kahichi the light having a single wavelength okay so example यार हला sodium lamp जोटा तुमे practical रे भी यूज करूछो okay now because of this shadow of the wire which is formed between the points here M and P okay जदि आमे याकू straight line join कर दबा ताले SAP आउ SBM आछी ओके SBM आसिला सो ए जो P आउ M भितरे ए पोर्शन टा ज्योमेट्रिकली जदि आमे कंसीडर करिबा दिस शुड बी द शैडो रीजन राइट अच्छा नाउ द रीजन which is beyond P माने P पॉइंट रो ऊपर को एठी लाइट देखा जिवो दिस इज द इल्यूमिनेटेड रीजन सिमिलरली पॉइंट M रो तळ को एटा भी लाइट देखा जिवो दिस इज आल्सो द illuminated region okay now the diffraction bands actually ei jo illuminated region re ame dekhiba ku paiba okay the diffraction bands of decreasing intensity and decreasing thickness are actually formed on the screen okay को जगह रे जेमति कहली ए illuminated region जो तळे ऊपरे माने P रो ऊपरे आउ point M रो तळे okay and the intensity of illumination in the shadow region माने ए जो shadow region होची PM okay this will depend on the thickness of the wire ए wire रो thickness ऊपर depend करिवो okay आ ए shadow region रे जो आमे पैटर्न टा पाइबा ज्योमेट्रिकल shadow region रे it is actually due to the interference okay so आमे एबे दुईटा केस कंसीडर करि परिबा okay फर्स्ट केस रे देखिबा जदी एई वायर को आमे गोटे थिन वायर नबा सेकंड केस ही जिवो गोटे थिक वायर okay so let us consider the first case of a thin wire okay so in this case only some half period elements of the upper half and lower half of the wavefront will be obstructed in case of the thin wire okay and all points above the point P जोटा हमें ऊपर फिगर रे देखुतला on the screen and similarly below the point M the obstacle will produce the same effect as that of a straight edge so straight edge ପାଇଁ already हमें previous class रे पढी सारछु so से भलिया ही effect देखैबो okay so the diffraction bands are formed in the illuminated region okay now the intensity of band will be maximum when the path difference between the rays from the pole of the wavefront with respect to a point G okay point G माने again come to the figure देखो एठी हमें गोटे point नेला illuminated region रे okay point G
ओके ताले पाथ डिफरेंस जदि एबे आमे कैलकुलेट करबा हैला सेटा डिपेंड करूची तमरो वेवलेंथ ऊपर ओके सो इंटेंसिटी ए पॉइंट जी रे मैक्सिमम केते बेले हबो जेते बेले पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज फ्रॉम द पोल ऑफ द वेव फ्रंट विथ रेस्पेक्ट टू जी एंड द एंड फेस ए माने देखो पोल होची एठी पी डैश आउ जी को मु जॉइन कर देली आउ सिमिलरली एंड पॉइंट ए को आउ जी को जॉइन कर देली सो ए दुई लाइन भितरे जो पाथ डिफरेंस टा जदि एटा odd integral multiple of wavelength lambda by 2 hela then the intensity will be maximum. Similarly the intensity of the band will be minimum when this path difference will be an even integral multiple of lambda by 2 or simply we can say that integral multiple of lambda right अच्छा तो ये हला जो इंटेंसिटी तमरो illuminated region रे now let us consider this shadow region ओके सो এই जो shadow region তুমি দেখুছ এটি center point হচ্ছে এটা O okay so intensity at this center of this shadow region here actually geometrically যদি দেখিবা এটা হচ্ছে পুরা পুরি ডার্ক রহিবা কথা shadow রহিবা কথা কিন্তু actually দেখা যায় কোন interference হচ্ছে ଆଉ point O মানে center point O রে here the intensity is found out to be maximum okay now actually it is concept hela the waves from the first second third etc of the exposed half period zones reach this central point O with the same path okay so that path difference ଆଉ କିଛି ବି ରହିଲା ନାହିଁ okay hence ଏଠି ଆମେ maximum value of intensity ପାଉଛୁ okay सपोज आमे आउ गोटे पॉइंट पे कंसीडर करला पॉइंट क्यू ओके जोटा कि पॉइंट ओ रो सेंटर पॉइंट रू ऊपरे अछि सपोज ओ क्यू इक्वल टू स्मॉल वाई ओके एटी मु करछि राइट सो ए क्यू पॉइंट पई जदि एबे हमें नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स जोटा कि ऑब्स्ट्रक्ट कर दोछि ओके केमती ऑब्स्ट्रक्ट करछि देखो आमे अपर हाफ नेबा आ गोटे लोअर हाफ नेबा ए वेव फ्रंट रो ओके एटा हला अपर हाफ एटा आसी गला लोअर हाफ ओके सो द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स जोटा ऑब्स्ट्रक्ट करी हे गला ए अपर और लोअर हाफ वेव फ्रंट रो that will be different in number okay and we can now determine the intensity at this point q by finding the path difference एबे केते हबो ए जो एंड पॉइंट्स अछि a और b ओके सपोज याको हमें जॉइन कर देला ओके सो ए क्यू और बी क्यू ए दुई भितर पाथ डिफरेंस केते ही जबो बी क्यू माइनस ए क्यू सपोज दिस इज डेल्टा ओके ताले এই ডেল্টার ভ্যালু যেতেবেলে ইকুয়াল টু ইভেন মল্টিপল অফ lambda by 2 or simply integral multiple of lambda ହେଲା then we are getting a bright band okay ଆଉ ନାଇଁ ଯଦି ଡେଲ୍ଟାର ଭ୍ୟାଲୁ odd integral multiple of lambda by 2 ମାନେ 2n plus 1 into lambda by 2 hela then we will get a dark band at this point q right suppose এটি দেখো distance ଆମେ ନେବା ଯଦି wire ରୁ screen ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି distance କୁ ଆମେ ନେଇଗଲା suppose small x ओके अच्छा এই जो wire ର ମାନେ पॉइंट p dash ରୁ o पर्यंत এই distance को आमे नेगला small x ओके आउ small d तो ऑलरेडी नेइछु thickness of the wire आउ o q को नेगला small y okay for the suppose nth bright maximum at the point q then we can have the value of this y should be equal to n lambda x by small d right so ये हेगला y रो value now if we consider this value of y with that of your interference fringes okay interference fringes ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ compare କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇ fringe ର fringe width କୁ ଆମେ ନେଇଗଲା बीटा ओके सपोज बीटा हेगला एठी fringe width ताले हमें जानिछु बीटा रो वैल्यू हे थाए लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d okay here capital D means जो हमें small x नीचु okay so the upper half of the wavefront above the wire acts as one source whereas the lower half of the wavefront below the wire acts as another source माने दुईटा source भलिया behave करूची and these two sources act as two coherent sources एई भलिया coherency आसुची because we know that interference हेबा पई
निहाती भाव में दुईटा कोहेरेंट सोर्स दरकार जो भितर कि पाथ डिफरेंसटा आइदर 0 हम कि constant रहिबो, right? So these two sources are coherent sources with respect to any point on the screen in the geometrical shadow region, that is between P and M. Okay, thus the interference fringes are formed due to two coherent sources. Okay, now here in the figure 7.9 we have the intensity distribution in the diffraction pattern. Okay, and the interference pattern is between the wire. Okay, एठी मु टिके एडिट करिछि बही रे टिके मिस्टेक थिला, प्रिंटिंग मिस्टेक. Okay, so देखो एटा जो डॉटेड लाइन आछी, दिस इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ द थिन वायर. ओके, जो वायर रो बाहर अछि दिस इज द इल्यूमिनेटेड रीजन. ओके, एठी डिफ्रैक्शन पैटर्न ए भला देखौछि. ओके, दिस शुड बी आइडेंटिकल, राइट? तापरे वायर रो भितरे एक्चुअली वी आर गेटिंग वेरी स्मॉल पिक्स and its intensity is maximum at the center point. Okay, center point है एठी जोटा O है ए जगह maximum है तापर कमी कमी वाला. Okay, so this is the interference pattern. Okay, so this is the case of a thin wire. Now let us consider the second case, which is that of a thick wire. Okay, so देखो thick wire जदि आमे नौचु, then in this case due to increase in the diameter of the wire, because thick nahi है तो diameter obviously increase है, hence the fringes will be now collapsed. Okay, that means the fringe width inside the geometrical shadow will now decrease. Okay, when the wire has very large diameter ताले कौन हबो, they will become sufficiently thick and the fringes inside the shadow disappears completely. Totally से disappear करी जिबे आउ पूरा पूरी dark हे जिवो. Hence the intensity diminishes, decrease करी जिवो from the edge of the shadow as we move deep into the shadow region. तेणु करी देखो एठी intensity distribution curve figure 7.10 रे एटा आसिला से वायर रो पोजीशन बाहर डिफ्रैक्शन पैटर्न एज इट इज अछि जेमति हमें ऊपर देखिला, किंतु भितरे आउ इंटरफेरेंस पैटर्न आसुनी, इंटेंसिटी पूरा डिक्रीज करि जाइछि. ओके, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ थिक वायर. ओके, नाउ in the illuminated region the variation in the intensity pattern, okay, जोटा कहले कि तुमको diffraction bands हमें देखिबा को पाउछु which is same as in case of thin wire. Okay, so एई जो diffraction हमें देखिला wire द्वारा होउछि, एक्चुअली याकू यूज करिकि हमें वायर थिकनेस भी बाहर करि परिबा आउ जो लाइट यूज करछु मोनोक्रोमेटिक लाइट तारो वेवलेंथ मध्य बाहर करि परिबा. सो हाउ टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए वायर? सो फॉर दिस पर्पस ऑप्टिकल बेंच रे एटा डार्क रूम रे प्रैक्टिकल हे था. ओके, यू हैव टू फोकस द माइक्रोमीटर आईपीस on the interference fringes which is obtained within the geometrical shadow of the wire. Now the fringes which are formed having equal width. Okay, so here you have to find the mean fringe width by measuring the shift in the crosswire for a known number of fringes. Okay, किछिटा particular संख्यक fringes रो shift करिवो. Okay, सेति पई fringe width मापिबा को हबो. Okay, and the diameter of the wire can be found out by this expression which is beta equal to lambda d by d. Okay, so এই expression ରୁ ଆମେ small d पाई परिबा which is the diameter of the wire. Capital T already एटा ଆମେ पाई परिबा which is the distance between the obstacle and the crosswire of the micrometer eyepiece. Lambda जदि आमे wavelength को known नेबा monochromatic light रो. ओके, ताले एई diameter जो practical रू बाहर कला ताको आमे screw gauge रे सेई wire रो diameter मापि कि आमे compare करि परिबा. ओके, similarly एबे जदि उल्टा जिंस करिबा by knowing the value of capital D and small d and measuring the fringe width, that is your beta, with the micrometer eyepiece we can determine the wavelength lambda of the incident light. Obviously it is the monochromatic light. Okay, so if one edge of the wire is covered and the corresponding straight edge fringes in the illuminated region disappear, then interference fringes in the geometrical shadow will be replaced by the straight edge fringes on the other side. Okay, so this proves conclusively that the fringes within the geometrical shadow are due to the combined effect
of two parts of the wavefront ଯେମିତି ଆମେ ଉପରେ discussion କରୁଥିଲା ଦୁଇଟା part କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା upper part that is ax ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା lower part that is by. Okay, so this is all about the Fresnel's diffraction pattern of a wire. Okay. Thank you.